Assalamu alaikum Hazrat. A very good afternoon, ladies and gentlemen, and a warm welcome to the closing ceremony of the BYD Karachi Marathon 2026. ऐसे लग रहा है हमारे एथलीट्स काफी थके हुए हैं. तालियां सिर्फ स्टेज से आ रही है. A big warm welcome to the BYD Marathon 2026. Thank you. Today we witness Karachi come together in the true spirit of endurance, discipline, and of course, community spirit. We witnessed elite athletes to first-time runners, which means that this marathon is a true celebration of resilience, health, and unity. Now, before we begin the formal proceedings, we would like to thank our partners, our sponsors, our volunteers, and of course the city authorities, without whose cooperation this event would not have been possible. To start with, I would like to introduce our first dignitary on stage who will give away these awards to our partners. A warm welcome for Dr. Syed Junaid Ali Shah, the former caretaker sports minister, who also ran 5 kilometers and, most importantly, who landed from London just this morning. So for his commitment especially, another round of applause, please. Thank you, Dr. Saab, and good to see you still standing on your feet. Would you like to say a few words before we start? It's wonderful to see the Karachi Marathon grow. छोटा सा पौधा शुरू हुआ था 3 साल पहले. सबने विटनेस किया. शुरू में लोगों ने कहा नहीं हो सकता. आज देखें क्या मेला लगा था. माशाल्लाह, it's so good to see. और इंशाल्लाह I really hope कि next year we turn this into a city marathon जैसे दुनिया में होती है. जनाब हजरात, सिटी मैराथन जैसे पूरी दुनिया में होती है. To start with, we'd like to thank our title partner BYD and Mega Motors. आ जाएं जनाब. Senior Vice President Danish Khalik Saab. Doc. Thank you. We would like to invite the representatives from Lifebuoy to please come on stage. Lifebuoy. Lifebuoy. Lifebuoy से कोई बचा है यहाँ पे, कोई रुका है? Anyone from Unilever? Cock-up is ex-Unilever. चले गेटोरेड. गेटोरेड से आपके एहलकार प्लीज स्टेज पर आ जाएं. और सूफी, बहुत सारे सूफी के बैग्स जा रहे थे. मूविंग ऑन, contributing partners Zerita Flowers. Zerita Flowers, lots of beautiful sunflowers in the house I saw. Saira from Zerita Flowers. Saira. चले मिठास के लिए Dunkin Donuts. Ayaz from Dunkin Donuts. और हमारे चैरिटी पार्टनर्स Al Furqan Trust. Al Furqan Trust, thank you जी. Al Furqan Trust, बराए मेहरबानी आ जाएं जी. आपका ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया. आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी, अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों ने हिस्सा लिया इसमें, और हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं. ये बड़ा अच्छी एक हेल्दी इवेंट था. बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मैनी मोर
in other time also. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. NIBD. Is there anyone here from NIBD? Moving on to our media partners, Quetta Gladiators. Zindagi Trust. Zindagi Trust, NIBD, our media partners, Quetta Gladiators, and of course, Geo Super. जियो सुपर सिर्फ दिखाते हैं कम बोलते हैं. थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ऑफ कोर्स the race would not be possible without our very hard working technical officials. Abrar, one of our technical officials, the head of the technical team. तो अगर अबरार है यहाँ पे प्लीज स्टेज पर आ जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मुसलसल 3-4 सालों से कराची मैराथन में इनके साथ टेक्निकल ऑफिशियल आ रहा हूँ. बहुत शुक्रिया सर निज़ामी आपका, बहुत कि आप इतना हमें हमारी पूरी टीम को हौसला अफजाई करते हैं. थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे. थैंक यू अबरार भाई, बड़ा जबरदस्त काम किया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया. We would also like to extend our special thanks to KMC, DHA, CBC, and of course the Prime Minister's youth programs for their continued support. Talia everybody please, thank you. देर से आए लेकिन दुरुस्त है. NIBD आ जाए जी. Thank you, Dr. Saab. बहुत बहुत शुक्रिया. Ladies and gentlemen, I would now like to invite Mr. Danish Khalik, Vice President Sales and Strategy at BYD Pakistan, Mega Motor Company MMC, for his address. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much. BYD and Mega Motor Company is very proud to be a partner for the BYD Karachi Marathon 2026. And we think that this is part of our larger vision of not only bringing sustainable transportation and mobility to Pakistan, but also inculcating, self-care and healthy communities. And as part of that drive, we are very proud to be the title sponsors for this event. And this could not have happened without the continuous support of the organizing committee, Mr. Shoaib, Sports in Pakistan, our own BYD team that has been working night and day to make this happen. And we are very proud to be to continue doing this in the future as well. And I was part of the 5K run myself. The kind of energy that I saw, the kind of enthusiasm that I saw from children to our senior citizens all participating, I think it's a very proud moment for all of us, and we're very happy to be a part of this. Thank you. Thank you, Danish. I know you're tired of your 5K, but please don't run away. If I could request you to come back. Hazrat, it would be unfair to let our dignitaries go empty-handed. So Danish, I would request you to kindly give the shields to Ronak Lakhani, Special Olympics, Pakistan. Masha, only I would say the man behind this amazing event is Shoaib Nizami.
A big applause for him, absolutely, and his lovely team. God bless you. Thank you, Ronak Appa. Another shield for Dr. Junaid. Please come. Thank you, sir. Former caretaker sports minister, Dr. Syed Junaid Ali Shah. Thank you, sir. And also is the man who's looking very busy on his phone, zyada baat karte nahi hai, but he's the man behind all the security, Dr. Joseph Mughal. डॉक्टर मुगल बहुत बड़े ऑरल सर्जरी के डॉक्टर हैं, तो इन्हें बोलने की आदत भी है, मैं इनको माइक दूंगा. Thank you, Ali. I'm just going to follow in what Ronak said, that this is all because of Shoaib Nizami, and we must appreciate him and thank him for putting Karachi on the map of marathon running. And I am so grateful to him. And honestly, it was Junaid who came on board the first time when we were doing it. He was caretaker sports minister, and he really went out of his way to make it happen. It wouldn't have happened. और उसके अलावा I am really grateful to BYD for stepping up, because I strongly believe that an event of this size and for a city of the size of Karachi cannot happen with a sincere partner. So the sincerity and partnership that you've shown, as a marathon runner myself and as a philanthropist of the city, I'm really happy to see that you've seen beyond the current vision of sponsorship and come into the 21st century. And I hope that you will continue that in other aspects as well. Thank you very much. Thank you all the organizers. Sorry? And can I call the AKU team to come on stage, because the AKU team, Aga Khan University Hospital, is another partner of ours since the very first marathon. So if we could have them on stage at this point, and we would like to present them with a shield and a group photograph, please. Without them and their hard work, their commitment, just absolutely fantastic. So can I just give the mic to Babar to introduce his team, please? The great doctors and paramedics of AKU. So thank you. So thank you so much, Dr. Janzeb and entire team of the marathon. So we are here as a medical team. We have a nursing staff, doctors, technicians, support staff to support this marathon. And this is our third marathon, and alhamdulillah, now we officially, signed the MOU with this marathon with Dr. Janzeb and Shoaib. Thank you so much for this, and thank you for my entire team who support us, who support this marathon. Thank you so much. Big round of applause for them. And who better than presenting this shield, Dr. Junaid Shah, please come. Who is also the former health minister, I'm told, by none other than Dr. Jazeb. One doctor to another. Thank you, thank you. बहुत-बहुत शुक्रिया to the Aga Khan team, and thank you to all our dignitaries once more. And with the preliminaries out of the way, it's time for the meat and bone, as they say. हमारे सारे athletes ने बहुत ही जोश और जज्बे से participate किया, and there are some wonderful times recorded. So we're about to start the prize distribution ceremony. I would like to request Dr. Syed Junaid Ali Shah to please come back on stage. Thank you, Janab. And we will start
with the relay. The winners of today's relay, followed by the half marathon, followed by the full marathon. और अगर आप लोगों को याद होगा रेस की शुरुआत में मैंने कहा था that BYD have a special surprise announcement, so you just have to wait for the full marathon results to find out what that surprise is. To start with, in the relay category, the first prize will be announced last. Let's start with the third place. Third place goes to the Young Incredibles. The Young Incredibles. Ajay, well done, chaps. Third place to the Young Incredibles. The Young Incredibles with a nice big prize. Talia for our youngsters. Mubarak ho, bahut bahut shukriya. In second place, number 6021, Zamare Athletics. Zamare Athletics, please come on stage. The cash prize of 30,000 rupees for Zamare Athletics. Well done, bahut bahut mubarak ho. Bib number 6030. तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें. Our winners, Dalmia Strike. Our winners, Dalmia Strike, with a cash prize of 50,000 rupees. Bahut bahut mubarak ho. Thank you. And thank you, Dr. Saab. If Ronak Lakhani is still here, can I request Ronak Lakhani to please come up on stage? We would request her to give away the prizes for the half marathon. अब हाफ के लिए want me to go 10,987 5 से स्टार्ट हो रहा है. 5 आपके पास कितने मेरे पास 10 है लेकिन नहीं फुल हाफ में हाफ है फुल है बस 3 को सही है फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया उसको. We are about to start the prize distribution ceremony for the half marathon in the female category. Ronak Appa. In third place, any guesses? In third place, with a time of 1 hour 59 minutes and 20 seconds, bib number 3366, Zoha Punawala. Zoha Punawala, bib number 3366. Matlab Zoha was so disappointed she didn't wait to collect her prize. In second place, Nadir, are you still here?
Dr. Rabia Nadir. No confusion, Dr. Rabia is collecting this on behalf of Zoha Poonawala. Okay, no confusion. Thank you. And we won't let Rabia Naeem go too far. In a time of 1 hour 58.54, bib number 3376. Second place, Dr. Rabia Naeem. It takes a lot to surprise Ronak Appa, but mashallah, you've done it. Fantastic, that's fantastic. Thank you so much. And in a time of 1 hour, 53 minutes and 57 seconds, bib number 3508, the one and only Kokab Sarwar. Kokab Sarwar. अभी आपकी कोच से बात करेंगे Thank you, Ronak Appa. Thank you very much. लेकिन आप इतनी जल्दी ना भागे रौनक आपा, मतलब साथ में हमारे मर्द हजरात भी भागे, आ जाए जी। कम यहाँ पे एक ऑनररी शील्ड हम देने वाले हैं और डॉक्टर जाजेब उसके बारे में आपको जरा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। अच्छा जी, एक रेस है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, उसको रिले रेस कहते हैं ना। 4 लोग भागते हैं 10-10 किलोमीटर, तो फिर ये फासला हो जाता है एक फुल मैराथन का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ताकि ज़्यादा लोग शिरकत कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई अच्छा रनर हो, तो वो कहते हैं चलो यार एक ग्रुप बना के कर लेते हैं। लेकिन मैराथन जैसे कि आप जानते हैं एक डिस्टेंस का नाम है, 42.2 किलोमीटर का एक फासले का नाम है। इसी तरह रूल्स होते हैं, हर चीज़ के रूल्स। तो इस रेस में जो मिनिमम एज है, जो सबसे कम उम्र है जिसमें कि आप शिरकत कर सकते हैं, वो है 13 साल। कितनी? 13 साल। 13 साल भी बच्चा ही होता है, लेकिन अभी बालिग होने की तरफ जा रहा होता है। तो अब उसका जिस्म तैयार है, उसका जिस्म कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स बना रहा है कि अब उसका जिस्म इस मैराथन की दबाव को और बिगाड़ को संभाल सकता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको मिसाल दूं, और एक मिसाल दूंगा। एक बच्चे का गुर्दा जितना ये थे कि जरूरी बात है, कैमरामैन प्लीज, कैमरामैन प्लीज खामोश, ये जरूरी बात है। एक बच्चे का गुर्दा जितना पानी पीता है, बगैर बचाए जिस्म में पेशाब कर देता है। ओके, अगर एक बच्चा 1 लीटर पानी पिएगा तो बगैर बचाए वो 1 लीटर पेशाब करेगा। लेकिन जब बालिग हो जाता है, बच्चे से इंसान जवानी की तरफ जाता है, तो वो उस पानी को बचाने की सलाहियत रखता है। देयरफॉर वो पसीना बहाने की सलाहियत रखता है और अपने जिस्म को ठंडा करने की सलाहियत रखता है। बेटी इधर आओ, जरा इधर आओ मेरे पास। अब ये बच्ची है, प्यारी मासूम बच्ची। बेटा क्या नाम है? कायनात। कायनात। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? 9 साल। ये 9 साल की है। अब इस 9 साल की बच्ची में क्या ये सकत थी जिस्मानी तौर पे कि इसको भगाया जाए? शर्म आनी चाहिए उस कोच को जिसने इसको भगाया। एज ए डॉक्टर मैं यही कह सकता हूं, ठीक है।
अल्लाह माफ करे आपको कि आपने इसका जिस्म जिस दबाव से गुजारा है, और आइंदा मैराथन्स में मैं गुजारिश करूंगा ऑर्गेनाइजर्स को कि इस बात का ख्याल रखें, ऐसे रनर्स को एंटर ना होने दें, लेकिन हम लोग इस बच्ची की मेहनत को बिल्कुल सराहेंगे और इसको एक ऑनररी एजाज देंगे, लेकिन आइंदा इस चीज को हम इनकरेज नहीं करेंगे, ठीक है जी, और शोएब निजामी ही देंगे। लेकिन कायनात के लिए तालियां। रौनक आपा, moving on to the winners of the half marathon male category with a time of 1 hour 20 minutes and 11 seconds. In third place, bib number 3574, Faizan Faiz. Male, third. Half marathon. फैजान के लिए तालियां प्लीज। फैजान फैज, third place, 1 hour 20 minutes and 11 seconds. Well done. Well done. In second place, with a timing of 1 hour 19 minutes and 48 seconds, bib number 3417, Ataus Samad. मुबारक हो अता, मुबारक हो। And our winner with a time of 1 hour 19 minutes and 29 seconds, bib number 3712, Muhammad Akhtar. मोहम्मद अख्तर के लिए खूब सारी तालियां प्लीज। Winner of today's half marathon. बहुत बहुत मुबारक हो and thank you रौनक आपा। And to give away the awards for the full marathon, our title sponsor, VP Sales and Marketing, I'd like to invite Mr. Danish Khalik, please. This is the big daddy, the full marathon. Danish, 5 kilometers this year, inshallah 10 next year or 21 next year. Half marathon next year, inshallah. देखिए मैंने नहीं कहा, दानिश ने कहा है। हाँ, जिस तरह इनकी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है ना, लंबी माइलेज देती है, कह रहे हैं उसी तरह अगले साल 21 भागेंगे। अगर आप 21 भागेंगे तो मैं आपके पीछे 2 तो भाग ही लूंगा जनाब। मई में भाग रहे, मतलब ही मे रन 21 या मई में भागेंगे? He may run. Chale ji, we'll start with the top 10 finishers of the full marathon. Female section, 10th place with a time of 5 hours, 29 minutes and 57 seconds. Bib number 1274, Fatma Mazhar.
फातिमा मजहर। अब पता नहीं 5.5 घंटे भागने के बाद ये स्टेज पर आ पाएंगी। फातिमा मजहर। मैं इनका दर्द समझ सकता हूं। 5.5 घंटे भागने के बाद पूरा जिस्म क्रैम्प कर जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत कर रही हैं और लंगड़ाते लंगड़ाते आखिरकार पहुंच ही गई हैं। मुबारक हो फातिमा, बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां इनके लिए। फातिमा थोड़ा सा मुस्कुरा ले, बाकियों ने आपका दर्द देख लिया, ये मुस्कुराने का वक्त है। ये तालियां, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। In 9th place with a time of 5 hours, 14 minutes and 15 seconds, bib number 1001, Manal Imran. इनको तो देख के ऐसे लग रहा है कि 5 घंटे और भाग सकती है ये। बहुत बहुत मुबारक हो मनाल। In 8th place with a timing of 5 hours, 13 minutes and 56 seconds, Aisha Intisar. Congratulations Aisha, well done. In 7th place, with a timing of 4 hours, 44 minutes and 26 seconds, bib number 1283, Dua Fatma. Dua Fatma. और ये दुआ की पहली मैराथन है, माशाअल्लाह, well done. Congratulations. In 6th place with a timing of 4 hours, 35 minutes and 55 seconds, bib number 1208, Aisha Mastoor. और ये तो अभी भी भागते भागते ही आ रही है। Well done Aisha. In 5th place with a timing of 4 hours, 24 minutes and 21 seconds, bib number 1293, Umaira Shiraz. Umaira Shiraz. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Thank you. In 4th place, with a time of 4 hours, 16 minutes and 44 seconds, bib number 1118, Seher Shera. Seher Shera. Seher Shera. बहुत बहुत मुबारक हो, congratulations. That's amazing, fantastic. Thank you ji. And now for the big three, ladies and gentlemen. In 3rd place, with a time of 4 hours, 10 minutes
and 07 seconds, bib number 1177, Uzma Abid. Usma, आप ये पकड़े, so he can give you the medal as well. बहुत बहुत मुबारक हो Uzma, that's fantastic. Congratulations. In second place, with a time of just over 4 hours, 4 hours, 3 minutes and 28 seconds, bib number 1, 2, 3, 4, Alicia Dawes. Congratulations, Alicia. If you can just hold that like that. That's amazing. Congratulations. And in a fantastic, astounding time of 3 hours, 33 minutes and 51 seconds, our winner of the female category full marathon, bib number 1321, Sarah Lodhi. That's fantastic. Congratulations. Just watching your drama episode in the morning, getting ready for marathon. ये कह रही है कि ये मेरा ड्रामा एपिसोड देख रही थी मैराथन की तैयारी में, उसकी वजह से तेजी आई, इतना बुरा लगा कि वो भागते भागते घर से निकल गई. बहुत बहुत मुबारक हो. Would you like to say something? It's an amazing time. Thank you so much. I came from Dubai. This is my 11th marathon and first time running in my hometown, Karachi. It was an amazing experience. बहुत अच्छी arrangement थी, even from international standards, hydration, medical support, and the best was the running environment. बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, everyone was encouraging each other, and I absolutely loved it. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations and congratulations on a fantastic time. Thank you. सारा के लिए एक और बार तालियां प्लीज. Moving on to our men's category, in 10th place with a time of 3 hours, 3 minutes and 43 seconds, bib number 1185, Saqib Shah. Sadiq Shah. बहुत बहुत मुबारक हो सादिक. With the time of 3 hours, 3 minutes and 40 seconds, running his first full marathon, bib number 1121, Shahrez Khan. Congratulations, Shahrez. Would you like to say some words? मेरी पहली मैराथन थी जी, और मैंने ये सोचा नहीं था मैं कराची में करूँगा. बेहतरीन एक्सपीरियंस जिस तरह शोएब और आप सब ने ऑर्गेनाइज किया इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर आऊँगा मैराथन के लिए इधर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहुत बहुत congratulations. With a time of 3 hours, 1 minute and 41 seconds, bib number 1103 in 8th place, Saqib Khan. बहुत बहुत मुबारक हो. In 7th place with a time of 3 hours and 9 seconds, bib number 1205, Amin Mukati. Moving on to 6th place, 2 hours, 58 minutes and 33 seconds, sub 3 hours, bib number 1201, M. Ali Haider. बहुत बहुत मुबारक हो. 2 hours, 55 minutes and 33 seconds, bib number 1241 in 5th place, Amir Shehzad.
हमारी एयरफोर्स के लिए तालियां. Congratulations. In fourth place with a time of 2 hours, 50 minutes and 29 seconds, bib number 1110, Abdullah Athar. Well done, Abdullah, well done. Amazing. Great time, congratulations. And now the top 3 finishers in the full marathon men's category with a time of, wow, with a time of 2 hours, 49 minutes and 05 seconds. कभी-कभी तो सदर से घर पहुंचने में उससे ज्यादा वक्त लग जाता है गाड़ी में. वाह जी, bib number 1215, मोहम्मद रमजान. ऐसे सामने पकड़ें ताकि तस्वीर भी खींचे आपके. ये मेडल के साथ. रमजान भाई के लिए तालियां. बहुत बहुत मुबारक हो. With a time of 2 hours, 48 minutes and 59 seconds. In second place, bib number 1309, Hamas Minas. जबरदस्त जबरदस्त जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो. And ladies and gentlemen, last but not least, our winner for the BYD Karachi Marathon 2026 with an astonishing time of 2 hours, 39 minutes and 58 seconds, bib number 1255, Israr Khatak. Last year he won with a better time. I think it was under 2:30. क्या कहते हैं इसरार भाई? पिछली दफ़ा भी बड़ा अच्छा रहा है, इस दफ़ा उससे ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि इससे पहले मैं एक मैराथन भागा था कोई 9-10 दिन पहले लोक सही था, तो इसलिए टाइमिंग में थोड़ी सी डिफरेंट आया है 10 मिनट की. और हमने तो पिछले साल के बनिस्बत इस वक्त मौसम भी आपके लिए बेहतर ऑर्डर किया था जनाब. इसरार के लिए खूब तालियां. और जैसे कि आप सबको याद होगा, शुरुआत में मैंने कहा था कि BYD एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली है, तो वो क्या है दानिश खालिक भाई हमें बताएंगे. जी जी. So as part of our commitment and something that we had thought of earlier, we're also the surprise is that we will be sponsoring the 2 contenders who got the first place for London Marathon this year. So BYD and Mega Motor Company will be sponsoring that. So Israr and Sara, please come on the stage again. इसरार और सारा, आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह लंदन जा रहे हैं. बिजनेस क्लास की टिकट जरूर लीजिएगा. BYD की फैंसी लेदर सीट्स में आपको नहीं भेजेंगे. ये देखें, कह रहे पैदल भेजेंगे. सारा दुबई से कराची, फिर कराची से लंदन. आ जाए. Congratulations. Fantastic initiative by BYD. Thank you so much, BYD. Tickets to London and participation in the London Marathon. Talia, please. Talia, everybody. Bahut bahut Mubarak once again. Congratulations. Thank you, Danish Saab. Thank you and congratulations to our athletes. And before we bring this event to a close,
I would like to request the good Dr. Junaid Ali Shah Sahab to please come and thank the most important people, our security and all our police who've taken so much pain and done such a fantastic job. We will present them with a memento and a shield, please. सिंध पुलिस, कराची पुलिस का बहुत बहुत हमेशा हर साल हमारा साथ देते हैं। डीआईजी मकसूद मेमन साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज़ाद खान साहब जो सीसीपीओ है हमारे, आप सबकी मेहनत की वजह से ये मुमकिन होता है। आपका बहुत शुक्रिया एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दोबारा मुलाकात होगी। With that, ladies and gentlemen, we come to the end of this prize distribution ceremony. Once more, it's been a fantastic turnout. पिछले 3 साल से I've been with Shoaib, watching his growth, watching the growth of the Karachi Marathon. और आज वाकई सुबह जब मैं कंटेनर पर खड़ा था, जो रौनक, the number of people who've participated, आंखों में आंसू आ गए. Full marks to Karachi, full marks to sports in Pakistan, upwards and onwards. And thank you BYD. Inshallah, to a bigger and better event next year. Pakistan!